You all guys know what is int, round, and truncee? If anyone knows, they can say me what is this all function about. Sir, Any round I think is for rounding of a number. okay? Or int? Anyone? What is truncee? Converting a number into an integer. So Great. I'm not sure, but does truncate means truncate? I mean, Yeah, is it like deleting a certain number or something? I think. yeah, exactly. Same thing. Sir, Okay, let's integer start. is int is integer. Int is integer. This is a short form, or this is a formula that is given in Excel. Okay. Let's see. Just start with the first slide. This is the int. This is called, this stand for the integer. This is a mathematical or trigonometry. Oh, this slide I can share with you all guys. You can go through with this after your drive, or before your drive. You can go through with this slide. Okay, just start with the int. Int is a stand for the integer. All the three functions I that show, int, round, and truncee, these three things are doing a same thing. Integer doing a same thing. They can remove after the decimal value. They can put only a integer value. Okay, let's take an example. Let's see. There is a value in a column like B6. There is a 1.2. This is a value, and I just put the formula int bracket B6. They give me the result is 1 because they remove all the decimal values. Okay, and they give you only integer. Same like this, round are doing same thing, but apart from integer, in a round you can pass the argument. You can pass the how many numbers you have required, how many numbers you want, or how many numbers you want to delete. These things can be done in a round and transi. Okay, let's see. This is how you can use the round. Okay, let's see here. You can Sir, will see you show the previous slide? previous slide. Yes, sir. Yeah. Yes, sir, will you please explain? Please Yeah. explain around again. Yes, sir. Like how it came. Okay, let's suppose if you put over there, there is a value is 1.2, and we round off this F6 column with the 0. Okay, 0 means there is a one, only one values. Okay, so we will Okay, sir. remove one decimal point from here, and he put one digit. You go for this slide, you can understand better. You see this slide and ask me a question if you have any doubt. Go through this slide, and if you have any doubt, any point, you can ask me. Sorry, in the trunk C4, comma 0. Sir, here we got 9. Yeah, you are passing the here this is an argument. These all things are is argument. This is a cell number, and these all are arguments. If you passing argument 0, there means there is a no decimal values after the decimal. If you put 2, there is a 2 decimal values. If you put 1, there is a 1 decimal values. Okay, sir. I have understood. Thank you. Okay, anyone else have any doubt? Okay, one thing I just like to share here, because the interviewer will be asked, what is the difference between the round and transi? Who can give me the answer? Sir, in round, we are rounding off. It's like there is 9.736. So, whatever number, like in -1, sorry, sir, like in 2, like we will be taking 2 decimal place. So, 736 becomes 74. But same thing when we truncate, it is just 73. Like we are cutting off the 6 only. We are not rounding off, like we are not adding it. Okay, anything, anyone also add something in this? Sir, I didn't get it, sir. You So, not sir, get in it. round, like up to if it's up to 5, then the previous digit will not change after that. If it's greater than 5, it will change. And in truncate,
the number of digits written, it will be only shown up to after decimal. Those only digits will be shown. Okay. Understand? Okay. Okay. Got it. Anyone else want to add something? Someone told me I'm not understand. Who's the person? Could you understand or not? Please tell me. Yes, sir. Now I have understood. No, sir. Okay. No, sir. No. What you don't understand? Sir, Tell me. I got the round wala part. I didn't get the transi. Okay. Yeah. Here you saw the things that I written in below part. You saw it and read it this. I hope after this you can understand the things. Okay. Yes, Same sir. thing. The madam and the also one student or one sir Got told it, sir. us exactly same thing. There you can understand the thing. That's why I write here. What is the difference between the trunk and around? Okay. Anyone else do not understand? Tell me. No. So So move to the there next is slide. so Yeah, there is tell a me. command round C4 comma -1. Okay. Yes. Sir, is it a perfect command? Why not? So we You can can put anything. round. So we can Oh, round. one thing. Everything is right if you think it's a right. Excel is a not any Excel have a do not have a any what do you call programming language have a compiler. Okay, programming language have a interpreter. They show you the error message. Okay, Excel does not have the compiler, but this does not show you any result. But they never give you any error message. But this is a right statement that C4 -1. There is a right statement. You can put over that. Okay, one thing. Just let me. You are the MBA guys. Tell me what you understand after decimal values means. What you understand? Could you anyone could you say what is the point 736? What this stand for? Anyone? Okay, let's move to the other part. We come up with this example or and some session also some exercise we have that we do. Then we clarify this -1 also. Okay, go to move to the next slide. So Okay, what we have written if we have done C4 comma -2. here result. What is result? So -2 doesn't exist. C4 -2. -2. Round We will do the C4 we will do that exercise. Don't worry. We will do Okay. that exercise. We move to the next slide. Okay, we cover up. We do the some exercise. Okay. And the same thing. Okay. Go to the next part. Working with the financial functions that you required for a your delight things or for a MBO Fox, you need these things. Okay, financial function. What is these are all financial functions are? Okay. Just see these all parameters or arguments. You just read it once, all the arguments, and then we go move to the next formulas that is called PMT formulas. Okay, then we will calculate the GST, we will calculate the tax, everything we can calculate. First read this argument first. What is rate, what is NPR, what is PV, what is FV, what is type. Just read once. If anyone having any problem regarding any point, you can ask me. Okay. It's completed, everyone. Sir, sir, I have a question, sir.
Tell me, please. Sir, NPR means total number of periods during which a payment is made. And like there is an example given, ki NPR of 60 for a 5-year loan where we pay once every month, apparently. So it can be total number of times, total number of times a payment can be made. I'm not get it properly. Please repeat once again. Sir, Please, tell me. sir, in case of NPR, sir, the total number of periods during which a payment is made is equals to the total number of times we make a payment. Because in the example that is shown, the 5-year wala example, it is the same Yeah. thing only. Yeah, ampere means total number of EMI you have to pay per month. You Okay, sir. understand? The total number of times, yes, sir. Okay. Next. Next, anyone? Any point? I hope everyone is clear with these things. Then we will move to the next slide. Should I move to the next slide? Tell me, Yes, please. sir. Yes or Yes, no? sir. Yes, Yes. sir. Yeah. Yes, sir. Okay. Okay. Here we have a formulas that is called PMT. Okay. PMT is for a many purposes you can use for a EMI calculation, for a different type of use. It's depend on the your uses probabilities, but basically this used for a EMI calculation. Okay. PMT. Here you read what is rate, what is MPR, what is PV, what is FB, what is type 1. Just saw this where you can put all the things, and then we move to the next slide. What is what we result we get after this? Simply just you put the column number. Okay, simply you put the person who asked me, sir, what is the what is the EMI or years or month? Here you can, if you put a year, it's a 4-year, you have to divide it by 12. Okay. If you put a rate, that is, let's suppose the today's interest rate is approximately 13.26% for a personal loan for every every average banking, every bank. So if you put the 13.26%, that is the interest per annum, and you have to calculate the interest per month. That's why we divided by 12. Okay. Let's see next point. Here you get the result. Okay. So although you have to think first, देखो you do the class, आपने क्लास कर लिया अभी, और आपको यहाँ से क्लास करने के बाद मैंने आपको स्लाइड भी दे दिया. आप लोगों का काम क्या है ना कि आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, खुद प्रैक्टिस करो. करने के बाद यू गेट द क्लियरिटी, बिकॉज एक्सेल इज सो इजी and so simple, you can understand everything. Because let's see here, if you put equals to if you put equals to and PMT, he shows every argument. You can here put rate, here you put NPR, here you put PV, FB, everything is mentioned over there. You have to know whatever things you did or do by Excel, and you just do it. Okay, just go to the next slide. So previous one is the PV, this is a FV. Okay, the final one is this. Should I go back, or you all understand the things? Please respond. Hey guys, bolo kuch. You understand the things, what, how you can calculate PMT? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Chal. Here we have one important point. Look at
Find data validation rules that set minimum or maximum values for a cell or range or cell range. यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि if you calculate any amount or any EMI, you get a lots of decimal values. So for that you need to be maximize or minimize your columns to look a proper shape or look a proper what proper amount. Let's suppose if you divide by 10 divided by 3 is a term, then you get a 33333.333 as an n number of times. For that you have to arrange your cell on properly, where you can use this. Data validation is a option or tool given in Excel. By them you can decide how many decimal you have required, how many decimal you want to put, or how many you want to remove. Okay, it's a simple thing. You have to practice it and you have to learn it, where you can go and find data validation, because your interviewer will ask where you can find data validation, which ribbon have a data validation, where you can find a range of a decimal, or where you can arrange the decimal values. Here you can know that round, trunk or integer have a same functions, but here data validation also a one tool given by the Excel. There you can arrange your cell. Understand? Okay, move to the next part. Yes. Depreciation. Just read the argument. Completed? Okay, let's. I don't understand. You guys are reading or what? What is a depreciation means? Sir, can I go to the previous page once Sir, again? yes, sir. This one. Yes, sir. Yeah. Anyone can explain what is depreciation? Sir, decreasing value of assets, sir. Why the value is decreased? Due to wear and tie, Due to usage, sir. wear and wear of the asset. Okay. Anything else? You guys are MBA folks. You better answer me these questions. Only the goods are here and there, or time taking, or whatever the reasons. There is a more reason also by which these things can happen. Okay. This is completed. Should I go to the Yes, next sir. slide? Okay. Boss, this is a request for you guys. Why I coming to the previous slide? ये जो आप देख रहे हैं arguments, you have to learn or you have to memorize these arguments. Okay, your interviewer will ask. At least you have to understand कि which argument used in PMT, which argument is used in depreciation, which argument is used in different functions. You know the arguments, which functions have a which arguments, and each and every arguments have the meanings. It's a very simple. If you cost means the original values. The same life is a period. So the same things will be is very easy, but you have to learn, because the interviewer will ask directly, tell me the arguments of the PMT. What all the arguments is, or he maybe give you the one problem statement and told you ki, please find out the PMT values or find out the future values or present values. They can give you the this type of things. Okay, so yeah, tell me. Can Tell you me. give one demo, sir, on the Excel by doing this, sir? Your voice is not audible, sir. Sir, can you please give one demo for this, sir, actually by putting some value and how to find that table, how to find that argument in the Excel? Yeah, obviously. Why? That's why I'm here, bro. Just complete this slide. I will give you an example. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, sir. Okay.
अच्छा भाई, बहुत तकलीफ कष्ट से बनाया है स्लाइड, इसमें सारा कुछ पिक्चर मैंने डाला है. You can same Excel you can open in your laptop. My screen is shared, your screen is not shared. You just open your Excel, you put the same values, you can practice over there also. I'm giving you time. You just take your time, you open a Excel. Don't need to put 250,000. You just take a small values and put these formulas. You practice on the same things on the then and there. You can understand. Try everyone to put this depreciation values. I give you a problem statement. Cost is uh, just write everyone. Give me the 10 years values. Okay, write problem statement. The cost is 50,000. Salvages is 2,000 rupees, and life is 10 years. Find the depreciation value in 10 years. Find and write in a chat box. Everyone. The life is how much you said about life? 2 10, years. 10 years. 10 years. 10 years. Okay. 10 years. Everyone find it and just send me a message in a chat box. Everyone I need to 2050. 2% is less. 203 message I need to be in a chat box within a 5 minutes. Just do it. Do it. So what was the value of salvage? Salvage is 2,000 rupees, ma'am. Sir, Okay. 20,000 you said, sir. No. 50,000 is a cost. 2,000 is salvages. Life in a year is 10. Okay, or you have to find 10 years depreciation. Clear? Once again, I repeat. Cost is 50,000. Salvages is 2,000. Life in a year is 10, and you have to find the values for 10 years depreciation. Clear for all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Find out and write the answer. Well, one person will give the answer. Is it right or wrong? I don't tell, but we find out some values. Good. Good. Second. Yeah, third. Who's the person? Manisha. Manisha, ma'am. I am not giving a dollar price. I am giving you a rupees. This dollar sign. Where you can find this dollar sign? Manisha, ma'am. Just remove this dollar sign. Yes, I'm changing. Okay. Why you guys are very slow? Do it fast. There is a 200 students, and I got getting only a 4 to 5 answers till now. Say anyone having does not have a laptop, और ये कौन है भाई? इन्होंने तो सारा कुछ भेज दिया है. Siddhant, I am asking for only 10-year depreciation, not all. Sorry. Okay. Rest person, please just write answer fast. So for the 10th year, right? Yeah. Sir, Yeah. sir, there is a cost, comma, salvage, comma, life, comma, period, comma, month, sir. So we have to put cost, salvage, life. In the period, what we have to put, sir? Very good. Period will be 1. Period will change. That's Sir, this is the
This is the function I showed you, sir. Till please see what is the period. Sir, period means how many years of depreciation you have to find out. Okay, sir. Okay. Lots of person have a wrong answer. Please validate your answer, and you have an option to send you again. Okay, still anyone having a any kind of dot with this formulas or PMT formula, please tell me right now. Because these two functions, either one or both can be questioned in an interview. So you have to clear all the things. Is these two functions you have to be cleared. And on one thing, I bluntly says because uh, for now, I just telling you or you can understand that is not possible. For that, you need to be you open your Excel, you do any value, you put any values, you find out 2, 3, 5, 6, 7, 8 PMT or 10 PMT or 10 depreciation, then you can understand the things how things will change. Okay. So try to do these things. Yeah, tell me. Tell me, ma'am. The result is not coming. Sir, it's showing that num. I guess the distance after that. Yeah, you do any argument you have put wrong. You just try to check the arguments. If you put every arguments in the right position, then there is no answer. That is the error message. Num is the error message. Okay. Excuse me, sir. Yeah, tell Excuse me. me, sir. Sir, Yeah. the depreciation value is coming in dollars, but I have put the input in rupees. Yeah, that's why I told some ma'am to change it, but ma'am does not reply me. Why it's not changed? Why it's come dollar? I come to that point. Wait. Okay, sir. Okay. You see, anyone can answer why this dollar sign is come? So because that is in currency format, we have to change it into general. No, no. Is there any other meaning of dollar in Excel? Anyone can explain? Yes, So sir, used to freeze the yes, cell. sir, in order to One by one. Ma'am, just ma'am first told me. Please, ma'am, So it please tell is me. used to freeze a cell. Freeze a cell. Okay. Anyone other who want to add something? Sir, international transaction is going, so that's why dollar is used. Very good, very good. I like your answer, sir. What's your name, sir? Chirag. Chirag. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. So the It's a good function is answer. a accounting function. That's why it's showing dollar. Okay, okay. Everyone is right, but I need one more answer. That is a one more thing can done by the dollar sign. Anyone? It's 200 students. I need that answer. अरे यार गूगल कर लो. गूगल नहीं है क्या? चीटिंग नहीं हो? एग्जाम नहीं कर रहे. गूगल करो. गूगल है तो सर्च इट एंड फाइंड द आंसर. गिव मी द आंसर यार. यार बी क्या एमबीए का स्टूडेंट हो बैठे बैठे सुनो. करो गूगल करके आंसर दो. फाइंड द आंसर. पूरा पढ़ के मत बता देना गूगल सर्च करके. यू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड टेल मी इन योर वर्ड. इतना तो कर सकते हो. So when you don't want to change something, then you can put. That is sir already told. That is already told. The freeze the cell. That ma'am is told that if you want to freeze the cell, you can put the dollar sign. That is already told, sir. Another thing.
अच्छा, anyone having a problem with the Hindi? I am to No, sir. प्रॉब्लम है समझने में हिंदी? Anyone? No, sir. I don't think No, problem sir. हुई तो No, होगा sir. आप लोगों को. No, है ना? sir. No, sir. रेफरेंस सेल का नाम सुने आप लोग? रेफरेंस सेल. Sir, it's giving only the reference and absolute difference. Absolute cell होगा. That's only the freezing Nishi mentioned. No, no, That's you all. heard the term reference cell. Reference it is. Absolute reference. No, no, I could not hear properly. क्या बोले आप सर? Absolute reference. Yes. What is the reference set, sir? So the reference cell means like for the next sales, we don't need to change, like we don't want to change anything, and we Very are good. fixing that particular cell to use in the Follows the next pattern. Very good. हाँ, आप क्या बोले सर? नेक्स्ट वन, हाँ बोलिए, आप क्या बोले सर? Sir, it follows the patterns in a reference pattern when you drag it. ओके. अच्छा, ये दो पर्सन ने जो बोला बिल्कुल सही है. अदर किसी को समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज टेल मी. नहीं तो इन्होंने को फिर से ये एलोबरेट करके बोलेंगे. दिस इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट. सर थोड़ा बता दीजिए सर. क्या? टेल मी सर, आपने जो बताया था फर्स्ट वन Sir, वाले. actually, sir, when you drag like in this very image, if you keep 1, 2, 3, and you drag it, putting a formula, it will keep like take a reference, follow a pattern, and if you put a dollar sign, then it will take a particular cell as a like एक absolute term लेके चलेगा, वो change नहीं करेगा उसको, अगर आप उसको drag करते हो. वेरी गुड. अच्छा चलिए, मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ सभी को पूरा एकदम इजीली. देखो ये लेट सपोज यहाँ पे एक डी, ये डी कॉलम में है और ये 11 रोज है, ठीक है, या रोज और कॉलम, ठीक है. आप लेट सपोज कि आप 7 का वैल्यूज को आप यूज करना चाहते हैं बाय 22 नंबर में, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे यूज होगा तो ये रेफरेंस हो गया इसका. समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखिए, कॉस्ट आप निकाल रहे हैं ना, कहाँ कॉस्ट निकाल रहे हैं आप? यहाँ पे निकाल रहे हैं B11 में आप कॉस्ट निकाल रहे हैं, सॉरी D11 में. D11 में आप यूज क्या कर रहे हैं? D7 का रेफरेंस यूज कर रहे हैं, D8 का रेफरेंस यूज कर रहे हैं, D9 का रेफरेंस यूज कर रहे हैं, D11 का रेफरेंस यूज कर रहे हैं, इतने का रेफरेंस यूज कर रहे हैं. अगर यही चीज आप DV न लगा के नॉर्मल फॉर्मूला अगर यूज करेंगे ना, और वहां पे अगर आप वहां पे रेफरेंस यूज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेल आपको डॉलर साइन देगा once you use the reference values. मतलब एक सेल का वैल्यू अगर दूसरे सेल में यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो आपका डॉलर साइन लेता है बाय डिफरेंस फॉर शोइंग अ डिफरेंस वैल्यूज. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, यस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. बड़ा टाइम हो गया, टाइम भी खत्म होने और बहुत सारा कुछ कवर करना है. 40 हो गया. चलिए, डीबी हो गया, डिप्रिसिएशन, स्मार्ट, ये सब तो आप लोग जानते हैं. स्मार्ट आर्ट माने चैट, वही पाई और ये सब चैट वैट बनाना, ये तो आप तो जानते होंगे. Yes, sir. Yes, ओके Yes. ओके. वन थिंग आई Sir. जस्ट वन थिंग, मैं कंप्लीट कर लूं, आप बोलिएगा, ठीक है. मैं आपका अपना नंबर दे देता हूं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है. और अगर इस क्लास के बावजूद भी आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आता है और आपको कहीं पे कुछ डाउट आता है, यू कैन पुट मी अ मैसेज, आई कैन रिप्लाई ऑन देयर. ओके. और इफ रिक्वायर्ड आई कैन कॉल यू. डू नॉट कॉल मी प्लीज, जस्ट टेक्स्ट मी. हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे थे? सर ये डीवी फंक्शन जो आप निकलवाएं सर, डीवी फंक्शन ये किस टर्मिनोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है सर? सर हम तो पूरा रामायण खत्म हो गया, अभी पूछ रहे हैं आप सर डिप्रिसिएशन वैल्यू निकाल रहे हैं सर. तो सर जैसे डीवी का कोई पार्टिकुलर ये है क्या सर? डीवी का मतलब full नहीं form है इसको सर ये? डिप्रिसिएशन का ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीवी लिखते हैं. ओके सर. ठीक है सर. जैसे पीएमटी, जैसे हम लोग अभी मान लीजिए ईएमआई कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहाँ पीएमटी लिखा हुआ था ना, दैट इज अ फॉर्मूला. ओके ओके सर. ओके, दैट फंक्शन नेम इज कॉल्ड डीवी फंक्शन. आप जो है ईएमआई कैलकुलेशन के लिए आप जो यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीएमटी फंक्शन. वी लुकअप, एच लुकअप जो भी है वो सब आपका फंक्शन नेम है. ओके, अभी आएंगे उस वी लुकअप के ऊपर में. ठीक है, तो आई एम स्किपिंग दिस चार्ट पार्ट. ठीक है, आप लोग इस चार्ट को थोड़ा थोड़ा आप ट्राई करके अप्लाई करना. ठीक है,
तो दिस इज नॉट बिग डील, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, मैं स्लाइड आपको ऐसे शेयर कर दूंगा आपके साथ। अच्छा, हाइपरलिंक ऐड करना आप लोगों को किसको किसको आता है और किसको नहीं आता है, और व्हाट इज हाइपरलिंक कौन नहीं जानता है, प्लीज टेल मी व्हाट इज हाइपरलिंक। कोई ऐसा बंदा है जिनको नहीं पता व्हाट इज हाइपरलिंक? प्लीज रिस्पॉन्ड। कोई Yes, sir. कौन हाइपरलिंक नहीं जानते आप? No, sir. ओके, एनीवन हु नोज द हाइपरलिंक कैन एक्सप्लेन बेटर, प्लीज टेल मी। सर व्हेन वी इंसर्ट अ हाइपरलिंक विद इन एक टेक्स्ट के बीच में, अगर हम एक टेक्स्ट में अगर हम एक हाइपरलिंक भेजते हैं तो इट बेसिकली बिकम्स द लिंक टू अनदर वेब पेज या फिर कोई पोर्टल। Okay, sir. I'm not justified with your answer. Next one. Next, anyone can explain hyperlink? वेबसाइट का लिंक होता है सर। वॉइस नहीं आया सर, ठीक से थोड़ा बोलिए, आवाज नहीं आया सर। बेसिकली वेबसाइट का लिंक होता है सर, मतलब टेक्स्ट में रहता है पर वो हाईलाइटेड रहता है, जिसको क्लिक करने से हमको अभी कोई डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन हम लोग मिल सकता है। खाली वेबसाइट ना कि एवरीथिंग, एवरीथिंग यू कैन लिंक। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप हाइपरलिंक का मतलब होता है एवरीथिंग यू वांट टू कनेक्ट विद द ईच वन। लेट्स सपोज ये कलर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कलर के ऊपर में मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि कलर को क्लिक करूंगा तो इसके जगह पे एक वर्ड फाइल खुलेगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कलर रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। यू कैन लिंक वन वर्ड, वन टेक्स्ट और वन लिंक टू अनदर लिंक इज कॉल्ड हाइपरलिंक। गॉट इट? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था हाइपरलिंक, समझ में आया सर? Yes, sir. ओके, ठीक है। हाइपरलिंक क्रिएट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसा एक बटन आएगा आपको, दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। ये आपको एक्सेल में दिखाई देगा, इंसर्ट में आता है, इंसर्ट टैब के अंदर में आता है ये हाइपरलिंक। यू कैन ऐड ओवर देयर, ठीक है। ये आपका हाइपरलिंक का डेफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है। इज अ क्लिकेबल ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट दैट व्हेन क्लिक्ड डिस्प्ले अनदर फाइल, ओपन अनदर प्रोग्राम, शोज वेब पेजेस, डिस्प्ले ईमेल एड्रेसेस, ठीक है। दिस इज हाइपरलिंक। ऐसा आपका बटन दिया हुआ है, राइट क्लिक करके आप उसको हाइपरलिंक में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और कंट्रोल के करके उसको आप देख सकते हैं। चलिए, ये देखिए, दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स। जब आप हाइपरलिंक को क्लिक करिएगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपका आएगा। यहाँ पे आपको जो शो करना है, जो दिखाना है, लेट सपोज मैं कलर बोला था आपको एग्जांपल कि कलर के ऊपर में क्लिक करने से आपको कलर का पेज खुलेगा, तो यहाँ पे आप कलर लिखेंगे और सेल रेफरेंस में आपको जो डॉक्यूमेंट देना है उसका एक लिंक यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। अगर उस सेल का रेफरेंस यहाँ पे डालेंगे तो कलर पे क्लिक करने के बाद आपका वो सेल का रेफरेंस दिखेगा, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? सर एक बार डेमो दिखाइए सर। डेमो दिखाते हैं, चलिए डेमो दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाएंगे। आप लोगों को दिख रहा है मेरा डेस्कटॉप? यस सर, पूरा दिख रहा है। ओके, ठीक है। चलिए, अभी हाइपरलिंक हम लोग यूज करेंगे। लेट्स सपोज मेरे को कलर, मैंने यहाँ पे कलर लिखा, ठीक है। चलिए जो भी स्पेलिंग गलत है, COLO सर। हाँ ठीक है भाई, का भी यहाँ पे तुम स्पेलिंग टेस्ट कर रहे हो क्या मेरा? हम एक्सेल पढ़ा नहीं रहे नहीं हैं। सर, लगा कमांड है लेट सर तो सपोज, थोड़ा। लेट सपोज यहाँ पे मैंने 4-5 इस सेल को मेरे को ये करना है, या लेट सपोज मेरे को फेसबुक के साथ ये कलर पे क्लिक करने से मेरे को फेसबुक खुलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे आप, इंसर्ट, यहाँ पे जाके भी आप राइट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हाइपरलिंक का ऑप्शन आ रहा है, हाइपरलिंक का ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट जो मैं सेलेक्ट किया था इसलिए टेक्स्ट आ चुका है। यहाँ पे एड्रेस आपको देना है, लेट सपोज www.facebook.com, ठीक है। Yes, sir. चलिए, मैंने ओके किया। अब यहाँ पे अगर आप
क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए फेसबुक खुल गया, खुला, हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. इस तरह आप दूसरे सेल को भी ऐड कर सकते हैं, वर्ड फाइल ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज, चलिए मैं यहाँ पे इंसर्ट का बात कर रहा था, यहाँ पे अगर आप वर्ड फाइल ऐड करना है तो यू कैन फाइंड द एड्रेस ऑफ अ वर्ड फाइल, ठीक है, ये हो चुका है इसलिए इसका एडिट नहीं होगा। तो आप वर्ड फाइल ऐड करना है तो आप जाके माई कंप्यूटर में जाके उस फाइल का लोकेशन निकाल के आप उसमें डाल देंगे, या एक फोल्डर में डाल के एक्सेल और वो दोनों फाइल एक जगह पे रख के उसका भी अगर लिंक डालते हैं तो वो भी आपका काम करेगा, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये आपका हाइपरलिंक हुआ। अब है नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन अगर हम लोग यूज करते हैं, या एक से दूसरा दो फंक्शन, एक ही फंक्शन के अंदर में दो फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। समझ में आया? नेस्टेड फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अगर में दूसरा फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। चलिए उसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेस्टेड फंक्शन। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एक, यहाँ पे एक सम कर रहे हैं, और यहाँ पे सम का ये फॉर्मूला है, सम कर रहे हैं और सम करने के बाद उस डिजिट को हम लोग जो है आपको, हेलो, हाँ सर, हाँ Yes, सर। sir. ठीक राउंड है। कर रहे Yes. हैं। नोट, अरे नोट मत करो मेरे भाई, मैं एक से आपको ये दे रहा हूँ, आपको ये स्लाइड मैं आपको दे दूंगा, आप समझ लो मेरे भाई। मैं ये स्लाइड अभी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अमित सर को दे देता हूँ, अमित सर बिल मेल कर देंगे आप लोगों को सबको, ठीक है। पिछला वाला सब समझ में आया भाई? ये Okay, गोला sir. सब पढ़ लिया आप लोग? हाइपरलिंक वाला सर। नहीं नहीं, नेस्टेड फंक्शन में हाँ मैंने सर, ये पढ़ वाला लिया सर। पार्ट जल्दी से स्किप कर गया, तो मैं बोला ये वाला पार्ट एक बार आप पढ़ लीजिए, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, उसका आर्गुमेंट क्या होता है, इसके लिए मैं बोला ये आप रीड आउट कर लीजिए एक बार। क्लियर? एनी डाउट? एनीवन? किस? नो? No, sir. नो सर। ओके, No, sir. चलिए, वेरी गुड। अभी यहाँ पे देखिए, और मेरे को, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप मेरे को एक्सप्लेन करिए कोई भी दो पर्सन कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग, कौन सा नेस्टेड फंक्शन यूज कर रहे हैं और इसका एक्चुअली कर क्या रहे हैं यहाँ पे हम लोग। सर सम करने के बाद राउंड कर रहे हैं फंक्शन। राउंड का जो है फॉर्मूला क्या है? सर राउंड सम। राउंड सम। Equals to sir, the number comma zero, like number and how much you want. We want to round up, like after नहीं 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 point. नहीं, Cell आई एम सर आस्किंग, नो reference नो 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 comma नो, zero. सॉरी सर सॉरी। राउंड सेल नंबर कमा 0। यस, तो यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला यूज किए हैं क्या? नहीं सर। नहीं सर. सर अभी डायरेक्ट करेंगे ना, राउंड यस, ब्रैकेट सम उसके बाद। ओके। और वन एक चीज आपको पता है, अभी नेक्स्ट में, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखें। चलिए ये वाला पार्ट को, ये वाला देखिए, ये दिस आर द नेस्टेड फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। ये आप, आपको बहुत जगह में हम लोग जो डीबी यूज किए अभी या पीएमटी यूज करिए, दीज ऑल द एग्जांपल ऑफ द नेस्टेड फंक्शन आल्सो, बिकॉज वन फंक्शन के अंदर में बहुत सारा फंक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द नेस्टेड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत भी आसान भी है, बट ये वाला पार्ट जो है इंटरव्यूअर पूछते भी हैं और स्टूडेंट घबरा के बोलते हैं कि मेरे को पता नहीं है। हाउ यू कैन कैलकुलेट जीएसटी थ्रू एक्सेल, और हाउ कुड यू कैलकुलेट द इनकम टैक्स थ्रू एक्सेल। ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं बहुत इजीली आपके लिए लिखा हूँ, थोड़ा पढ़ के मेरे को बताइए कि इसमें क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको या क्या समझ में नहीं आ रहा, प्लीज।
Anyone having any problem or any doubt, please ask, because time हमारे पास बहुत limited है, अभी बहुत सारे slide हमको cover करना है. Do it fast. Anyone having any problem or understanding? सर ये टैक्स में डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया सर? 100% से कंपेयर कर रहे हैं क्या? The tax is included in that. X percent है भाई. और कोई और कुछ कोई ऐड करना चाहता है? मैं देता हूँ सर आपका आंसर. और कुछ कोई ऐड करना चाहता है? एनीवन? नो सर, टैक्स जो है हमेशा परसेंटेज में आता है. परसेंटेज का मतलब ही होता है सर, आई होप, मैं तो पता नहीं हाँ सर, मैं, वही मैं बोला था 100 से उसको ये कर रहे हैं. हाँ 100 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन आप यूज कर सकते हैं. नॉर्मल जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है हमारा, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डिनरी चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग. ये मल्टीप्लाई, डिवाइड और डिवाइडेड बाय 100, दीज आर द नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हम लोग को होता है, जो हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं. यू कैन एग्जैक्टली यू कैन पुट इट ओवर देयर. ठीक है, क्लियर? सर सेकंड लाइन में टैक्स अमाउंट दूसरे फॉर्मूला से किए. क्या बोले सर, सुनाई नहीं दिया ठीक से. सर टैक्स अमाउंट दूसरे वाले में सर अपने कुछ अलग फॉर्मूला यूज किया है ना. A6 डिवाइडेड बाय 100 प्लस B6 into 5. ये है यहाँ पे देखिए, इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट. ठीक हाँ है, सर. समझ गए. ये वाला जो कैलकुलेशन हो रहा है, इसमें हाँ. आप जो है, एक होता है इंक्लूसिव और एक है इंक्लूडेड. दो चीज होता है ना. क्या होता है आप लोग बताओ बेटर में, क्या होता है? दो चीज होता है, एक होता है इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव. हाँ, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव. हाँ. ये दो अलग अलग चीज है. एक में एक्सक्लूसिव हो रहा है, एक में इंक्लूसिव हो रहा है. ऊपर वाला है आपको टैक्स उसमें ऐड हो रहा है, और नीचे वाले में माइनस हो रहा है. एक्चुअली मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ. ओके सर. फॉर्मूलाज तो आपको पता है ना, फॉर्मूलाज देख लीजिए आप. वो वाला जो टर्म है आप बाद में क्लियरली आप जान सकते हैं. ठीक है, आपको यहाँ पे बस जानना ये है कि कैसे हम लोग पुट कर रहे हैं फॉर्मूलाज इन एक्सेल. फॉर्मूलाज यू कैन गेट एवरीवेयर. ठीक है, ओके सर. एनीवन एल्स? ठीक है, चलिए नेक्स्ट. बहुत सारे स्लाइड बाकी है. चलिए अभी गुड, अब एक अच्छा पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग. लुकअप. लुकअप्स का मतलब होता है फाइंडिंग अ वैल्यूज और फाइंडिंग अ रिजल्ट. ठीक है, फाइंडिंग अ रिजल्ट इन अ लेट्स सपोज कहीं पे भी कुछ आपको फाइंड आउट करना है. लेट्स सपोज आपका you have a lots of data. If you have a 1 lakh data sheet with you, and you have to find out which person have a which person or how many person have a between the age of 10 to 12. How could you find it? You have a lakhs of data in your sheet, and you have to find how many person is from age 10 to 12. कैसे आप लोग निकालेंगे बताइए? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बोला? एवरीवन, Yes, sir. व्हाट इज द आंसर? सर वी लुकअप. और भी है, वी लुकअप ही नहीं है. वी लुकअप तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप बोले वी लुकअप. और भी बहुत सारा चीज है भाई. सर इफ भी लगा सकते हैं सर. इफ से आप इतना सारा डाटा फाइंड आउट नहीं कर सकते भाई. सर क्वेश्चन दोबारा बोलिए. If is a logical function, they can give you a true or false values, not a exact values. वो आपको लॉजिक देगा, आपको 1 0 ट्रू फॉल्स ये देगा आपको. इफ समझ रहे ना, इफ नहीं यूज होगा. और कुछ बताइए. Sir, find. फाइंड ठीक है, फाइंड ठीक है, बट आपको लैक्स ऑफ डाटा है मैडम आपके पास. यू कैन नॉट फाइंड 10 से 12 के बीच वाला वैल्यूज निकालना है आपको. नहीं निकालना है कि जिसका 10 है वही नहीं निकालना आपको. 10 से 12 का बीच का रेंज निकालना है आपको. Sir, we can use schedule function and we can sort it. Sort. Like वेरी क्लोज, वेरी क्लोज. थोड़ा सा और एफर्ट लगाइए. वेरी क्लोज. और anyone add anything? Sir, index match. इंडेक्स मैच नहीं. देखिए आप लोग एक्सेल में, ये देखिए मैं अभी यहाँ पे एक एक्सेल खा
इसका ऑटो फिल्टर का नाम सुने हैं? ऑटो Yes, sir. फिल्टर, ऑटो फिल्टर लगा के अगर हम लोग सॉर्टिंग करते हैं या ऑटो फिल्टर लगा के अगर हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग को इजीली निकल जाएगा। एज के ऊपर में क्लिक करेंगे तो एज के हिसाब से हमको वैल्यूज निकल जाएगा। ठीक है, 10 to 12 क्लिक करेंगे वहां पे कर सकते हैं हम लोग, बट दैट इज ऑल्सो अ वेरी टाइम टेकिंग टास्क। आप ऑटो फिल्टर लगा के या कस्टमाइज फिल्टर लगा के आप कर सकते हैं ये काम जो वी लुकअप में हम लोग कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग टास्क। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नीड वी लुकअप और लुकअप। ठीक है, चलिए यहाँ पे डेफिनेशन है लुकअप का, देख लीजिए एक बार। There is a two type of lookups, the V lookup or H lookup. V for vertical lookup and H for horizontal lookup. Got it? Should I go to the next slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Here you can find the replacing a lookup table range. Sir, your volume is low. Okay. Yeah. Here is the Yes, sir. your is audible. Yes, sir. Yes, sir. Now it's okay. It's audible. Okay. So here is the VLOOKUP formulas and the arguments. You just see clearly where we can. These are 4 arguments you have to pass: the lookup value, table arrays, column index number, or range lookup. ठीक है, range lookup is a logical, either true or either false. Column index number, which column you want to find, कितने नंबर पे है वो column, that you put over there. And table arrays मतलब आपका डाटा शीट, जिस डाटा शीट से आपको फाइंड आउट करना है वो पूरा का पूरा इंटायर रेंज आपको इसमें डालना है, इसलिए एरे लिखा हुआ है यहाँ पे। और लुकअप वैल्यूज माने कौन से वैल्यूज को आप लुकअप कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लुकअप क्या कर रहे थे, 10 और 12 एज के बीच में कौन कौन है, जैसे ये पुट यहाँ पे 10 और 12 और वो सेल का नाम लिखेंगे और यहाँ से आपको टेबल एरे जो है आपका पूरा वो लाख जो डाटा आपके पास है वो वहाँ पे डालिएगा, उसका एरे ये सीट का नाम या सीट को पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे डालिएगा। दिस इज कॉलम इंडेक्स, ये सर लुकअप, ये लॉजिकल है, इसमें 1 या 0 आप दो में से एक चीज डाल सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. ओके, चलिए ये तो लास्ट था। ये सब चीज तो नॉर्मल है, हेडर पुडर में कैसे इमेज लगाएंगे एंड ऑल, दीज आर थिंग्स यू कैन। वाटरमार्क, आई होप यू गाइस नो व्हाट इज वाटरमार्क एंड हाउ यू कैन पुट इट वाटरमार्क्स और कस्टमाइज वाटरमार्क्स कैसे डालते हैं, दिस थिंग यू नो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, इतना ही हमारा था सिलेबस। सर और कुछ शॉर्टकट है क्या सर? दे आर आस्किंग मोर इनटू शॉर्टकट क्वेश्चंस लाइक शॉर्टकट कीज, जैसे शॉर्टकट कीज पूछेंगे ऐसे डेलॉइट वेबिनार में बोले थे। मैंने प्रिपेयर करके रखा है सर, इसीलिए मैंने आपको ओके सर, ओके। 2 पीपीटी मैंने भेज रहा हूँ अभी आपको। अमित सर से आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। अमित सर विल बी शेयर यू द 2 PPTs. One is with the only shortcut keys and another is that slide that I taught you right now. Okay. Okay sir, okay. Apart from that also, I have given you my number. Just write it down. 1 minute. In chat window, I will just write my number. Please do not call, only text. Okay. This is my number. You just text any problem you have, any problem or any kind of doubt you have. Okay, you can ask me in this WhatsApp number. Got it? सर कहाँ पे नंबर भेज नहीं है सर, नहीं है सर। सर आपने पर्सन में भेज दिया किसी को। Okay, sorry. Now it's visible to all of you. Yes sir, yes sir. Okay, write it the number and if you have any doubt or कुछ problem कर रहे हैं, कहीं पे कुछ आपका problem हो रहा है, just take a snapshot or a screenshot. You can send it to me and write this. I can reply you back. Okay. And if required, I can call you. Okay. Okay, thank you sir. Okay. Thank you so much. Bye bye. Best of luck for your. Thank you sir. thank you, sir. Thank you. Thank you sir.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir.